दोस्तों, हमारे आज के जो गेस्ट्स हैं, एक का नाम वैसे तो प्रेम है, लेकिन इन्हें सबसे ज्यादा खुशी होती है जब लोग इनसे नफरत करते हैं। मैं बात कर रहा हूं सेलिब्रेटेड स्क्रीन विलन प्रेम चोपड़ा की। और प्रेम चोपड़ा साहब के साथ आज उनकी बेटी है रकीता नंदा, जिन्होंने हाल ही में उनके डैड पर किताब लिखी है, प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा। तो फ्रेंड्स, प्लीज वेलकम द फादर डॉटर ड्यूओ ऑफ प्रेम चोपड़ा एंड रकीता नंदा। वेलकम टू बॉलीवुड। थैंक यू माय डियर, थैंक यू। प्रेम साहब, जब रकीता ने सबसे पहले आपको कहा कि मैं आप पर बुक लिखने जा रही हूँ, आपका रिएक्शन क्या था? द वेरी फर्स्ट रिएक्शन। The very first reaction was when she told me, I said, "Are you sure?" She said, "Yes, I want to write it because they had a discussion at home." I said, "Okay, go ahead." So she was given a green signal by me. Go ahead. एंड रकीता, आपने सोचा कैसे कि मुझे बुक लिखनी है डैड पर? एक्चुअली माय हस्बैंड राहुल और मैं एक दिन जैसे चाय का कप पी रहे थे, जैसे अभी हम पी रहे हैं, एंड राहुल ने कहा कि दिस इज 100 years of cinema and your father has been there for 50 years. तो इसके बारे में एक बुक लिखनी चाहिए. So that's how the idea originated. अच्छा. And you got going immediately? Immediately. Then the next day I spoke to him. I went home and first he was like, "You'll write what you'll do." I said, "Okay, fine. Let's just start from the day one." And every day for the first 3 months I went और हम साथ में we met and we chronologically from the first film he started telling me his life stories and anecdotes that had happened. And also my mother had kept from the year they got married in 1969 till today, she has kept all his press clippings. So I had Really? Yes, I had 8 box files, I think about 10,000 press clippings, everything was there. And then I started talking to his friends. अब मैं जिससे भी बात करती, everybody said yes. To a point कि I had to stop calling, not to offend anybody, but I had to stop writing sometime. So नहीं तो फिर वो never ending book बन जाती। Never ending book बन जाती, actually, really. And then another remarkable thing happened कि I started seeing his movies, 70s and 80s again. And I remember I was seeing Dhan Daulat or Trishul, one of these movies, and I am thinking, hey, he's a good actor, man. After so many years, I was rediscovering my father. Because when we were children, he was the villain. Correct. And for us to see his movie was traumatic. But now, so I was seeing it at a critical, the critical point of view, how he was doing. And that was quite interesting, I thought. Very so many years later, and I'm thinking, oh, he's a good actor. प्रेम साहब, आप स्क्रीन विलन हैं, तो जब आप फिल्मों में काम करते थे, जब रकीता और आपकी दूसरी 2 बेटियां छोटी छोटी थी, तो ये आपको शक की नजर से देखती थी, डरती थी आपसे या कैसे? साहब, मैं इनसे डरता था। लोग मुझसे डरते थे जब मुझे देखने के बाद पर्दे पे, और मैं इनसे डरता था। तो जब ये फिल्म देखती थी तो इनके चेहरे पे बड़ा एक्सप्रेशन अजीब सा होता था, और जब मुझे देखते थे, यार ये घर पे तो कॉमेडियन है, ये है वो है, यहाँ बड़ा खतरनाक आदमी। तो फिर छोटे थे, लेकिन इनको बैठ के बताते थे हम, देखो बेटा, ये जो है ना, ये एक एक्टर का काम होता है करना। उसी की वजह से ये अच्छा घर पे रहते हैं, गाड़ी है, ये है, तो दिस इज अ प्रोफेशन। तो जितना जो भी कैरेक्टर हमें दिया जाता है, अगर हम जितने कन्विंसिंगली करेंगे, उतना हमें काम ज़्यादा मिलता रहेगा और लंबे अरसे तक रहेंगे। तो फिर इनको समझ आ गई, हम बैठा के बात करते रहते, देन दे यूज्ड टू दे लर्न एंड नाउ दे बिकम बिग क्रिटिक्स ऑफ माय वर्क। प्रेम साहब, 50 साल से आप काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली यू मस्ट हैव सीन hundreds of changes in this industry. कुछ 2-4 बहुत ही पॉइंटेड चेंजेस क्या नजर आए हैं आपको? तीसरा एक तो चेंज ये नजर आया है कि आजकल कंप्यूटरोलॉजी हो गया, स्पेशल इफेक्ट्स हो गए, विजन चेंज हो गई, और बड़े बिफोर दे गो ऑन द सेट्स दे हैव द बाउंड स्क्रिप्ट विद देम। सही बात, जो पहले में नहीं था। हाँ, पहले में अच्छा फिल्में एट स्ट्रेच बनती। Correct. That method is now they are trying to emulate that method from America or other countries. They never go on the sets with them. They work on the script for 1 year and they finish the picture in 4 to 5 weeks. जब उन गाने वाने भी नहीं होते तो यहाँ जरा टाइम ज़्यादा लग जाता। तो ये चेंजेस हैं। उस वक्त पिक्चर जब बनती थी, एक ये बात थी कि बड़े पैशन और बड़े ऑब्सेशन के साथ
पिक्चर बनाते थे। आजकल ज़रा मटीरियलिस्टिक है चीज़ें, जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी, बिकॉज कॉरपोरेट्स आ गए तो ये सब चीज़ें, and they have easy finance with them. Also at that time, it was films were not made in isolation. It used to be a group activity. We'll come on the set and everybody could contribute, give the suggestion. And sometimes the suggestions were overruled, sometimes they were accepted. तो आजकल जो बाउंड स्क्रिप्ट जो है ये तो एक दफ़ा दे दिया आपको तो साहब ये इसी पे ही इसी के इर्द गिर्द ही चलिए ज़रा। तो किस में ज़्यादा मज़ा आता था, उस सिस्टम में या इस सिस्टम में? उस सिस्टम में मज़ा डिफरेंट किस्म का था, लेकिन वो गैप बड़ा होता था। पिक्चर बनाने में कभी 1.5 साल लगता था, 2 साल लग जाते थे। आजकल फिल्में 3-4 महीने में ख़त्म हो जाती, कंटिन्यूएशन रहती है। इट्स गुड फॉर द एक्टर्स, गुड फॉर एवरीबॉडी टू हैव दिस सिस्टम। लेकिन फिल्में जो उस वक्त बनती थी, हालांकि वी वर टेक्निकली नॉट वेरी एडवांस्ड, वी डिडंट हैव दैट इक्विपमेंट दैट दे हैव इट नाउअडेज, बट नाउअडेज एवरीथिंग इज बिकम लिटिल इजियर। रकीता, मुझे ये बताइए, इस बुक को लिखते वक्त डिड यू डिस्कवर सम न्यू फैसेट्स इन हिज पर्सनालिटी? I did actually. Like I've mentioned in that book, I've rediscovered him, and you know, I tried many versions. First, I tried to do it in third person, then I tried to do it in second person with that. Finally, when I did it in first person, then actually the subject and me became one. Okay. So, and writing, I remember meeting Salim uncle, and he said writing is not that you. Yes. And he said that, you know, writing is not that you're going to sit on a table and chair and write. You're doing it 24/7. You'll be walking and you'll be thinking and everything. So it was constantly, whether it was at breakfast, lunch, dinner, walk, it was constantly, how am I going to do the next thing? Okay. So eventually when I wrote, if you read the book, you won't realize there is a second person reading. You'll think he's written it. Okay. And I remember my sister, Prerna, she's commenting, once she'd read the final draft, she's told Papa, you know, I liked जैसे आपने वो चीज़ लिखी. So then he said, I didn't write it, she did. But at that point of time, she just read, and she thought he had written it. And even, that's you know, very nice. It became one. The subject and the writer became one, and that's how. Like now, I know if there's something. Past 2 years, I've lived with that, and I know how he's thinking, what he's going to say. It became part of me. That's how it came out. It is totally a hard effort. Sometimes I never knew what went on with them. I never knew. When I read the book, I said, this is what has happened. And it's right from number A to Z. It is her effort, her involvement, and absolutely total credit should be given to her. Wow. But you know, another interesting thing happened. He said after he read the version, he said, "Damn interesting story." Papa, ये आपकी life है, you know. Damn interesting story. I could not leave the book. Once I started reading it, I started reading it with a little scare in my heart. यार कुछ गलत हो गया, कुछ गलत लिख दिया. कैसा लिखा होगा इसने? नहीं, वो नहीं, मेरे बारे गलत लिखा होगी, लेकिन यार लोग accept करेंगे कि नहीं इसका. Once I started it, I couldn't leave the book. I have a very normal life, but she made it look so impressive and so interesting. I was wondering, am I this way? So, but this is her conception that she's written that way.